Namaskar, Adab, Sastriyakal. Everybody, welcome to Harita's Conversation. It's a freedom month. तो इसी फ्रीडम को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्रीडम टॉक के माध्यम से, जहां पर हम बात करते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्रीज पुश की है एंड दे अचीव्ड फ्रीडम इन देयर ओन डेफिनेशन इन देयर ओन वर्ल्ड। आज का टॉपिक इसलिए स्पेशल है, या ये टॉक छोटी है बट इसलिए स्पेशल है बिकॉज इट्स अ फ्रीडम मंथ एंड इट्स इंटरनेशनल यूथ डे। सो अगर हम कहें कि भारत विश्व का सबसे ज्यादा यंग जनरेशन वाला देश है, तो यहाँ की जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, व्हाट डू दे थिंक अबाउट फ्रीडम, व्हाट फ्रीडम मीन्स टू यू, टू देम, टू यू, टू एज अ ओल्डर जनरेशन, हाउ यू इम्पोज द थिंग। सो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कम्युनिकेशंस, वर्ल्ड इज नाउ जस्ट वन वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड इंडियन यूथ इज देयर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी जिज्ञासा, बहुत सारा काम हो रहा है। So let's try to sum it up in this freedom talk with Madhesh Parikh. Madhesh, welcome to Harita's Conversation. Thank you so much. It's an honor to be on this platform. Okay, now before we move on, it's very hard to sum up Madhesh's introduction because he is National Award winners by Government of India, 2 awards, Indira Gandhi NSS National Award, National Youth Award. He is a pioneer of so many of the programs, whether it's be heritage, whether it's with COVID, whether it's be social welfare, whether it's be the startup, entrepreneurship, global city shapers, and the list goes on and on. So let me sum it up. He better to known as the Auxiliar Foundation's member, founder, and the president, and youth leader. I think is the best crisp designation if I can give to Madhesh. So Madhesh, once again, आपका बहुत स्वागत है. Thank you so much. Thank you. Okay. Madhesh, शुरुआत करते हैं. How do you define freedom? आप क्या समझते हैं? क्या है आजादी? So there are two aspects to freedom. One is a nation as a whole. Freedom is something. Freedom is something that we have inherited. From our past generations. Who have fought really hard. जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए काफ़ी एफर्ट्स दिए. तो आई थिंक फ्रीडम ये जो इनहेरिट हमने किया है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके साथ साथ सोसाइटी में एक फ्रेमवर्क है, ढांचा है जिसके अंदर हम लोग काम करते हैं, और वो सोसाइटी के अपने कुछ विचार है और कुछ कन्वेंशनल आइडियाज़ है, कुछ कन्वेंशनल थॉट प्रोसेसेस है. तो मेरे लिए पर्सनली फ्रीडम ये है कि how I want freedom from this conventional ideas and thought processes, and I can independently experiment on my own ideas which have never been worked before. So I think मेरे लिए ये freedom मायने रखता है. So you said rightly that freedom from the conventional thing, क्योंकि बहुत टाइम से बहुत सारी चीजें इस हिसाब से सोसाइटी में आई है कि कहीं ना कहीं हम नेचुरली उस हिसाब से सोचना शुरू कर सकते हैं. Madhesh, recently we got so many of the reports saying India is doing good, it's all these things, but there's always a but. जिस हिसाब से the other countries when they had their younger generations, और उसको जिस हिसाब से उन्होंने यूटिलाइज किया था और जिस तरह से डेवलपमेंट की रेस पकड़ी थी, भारत के युवा कहीं ना कहीं उस कंट्रीब्यूशन में दे आर कीपिंग बैक. व्हाट डू यू थिंक, हाउ, व्हाट इज द रोल ऑफ youth, Indian youth in India's development? It can be the youth presently in India or across the world who are NRIs who wants to contribute in India's development. Right. So सबसे पहले तो ये बता दूं, यूथ ना कि सिर्फ इंडिया बल्कि कोई भी देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या कंट्री का कोई भी कंट्री का प्रॉस्पेरिटी है, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स यंग पीपल, बिकॉज यही यूथ है जो नेशन को ड्राइव करता है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन. और आज आप देख रहे हो एज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कितना मैटर करता है. तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, लाइक आई हैव ट्रैवल्ड ओवरसीज, और जितना मैंने देखा है, आई हैव आल्सो इवॉल्व्ड एज अ पर्सन. आई वाज नॉट वेरी ओपन बिफोर, और मैंने खुद में एक ट्रांजिशन देखा व्हेन आई हैव ट्रैवल्ड अब्रॉड. द यूथ देयर, दे आर वेरी ओपन माइंडेड. सेकंड वन, दे आर एक्सट्रोवर्ट, दे आर मोर एक्सप्रेसिव. जो करना चाहते हैं वो उसको अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं. सेकेंडली, दे बिलीव एंड इन्वेस्ट इन रिसर्च, विच आई बिलीव इंडिया में ये इतना नहीं हो रहा है. सेकेंडली, उधर एक ऐसा माहौल है, ऐसा कम्युनिटी फ्रेमवर्क है जहाँ पे वॉट एवर इफ समबडी इज डूइंग अनकन्वेंशनल,
तो पीपल अप्रिशिएट दैट, तो कम्युनिटी से हम्म, अप्रिशिएशन आता है। जबकि बिल्कुल। यहाँ पे है, यू नो, दे डू नॉट बिलीव इन youth as much, as what is believed outside. तुम्हें क्या यहाँ पे समझ में आता है? हाँ, तुम्हें क्या हाँ, समझ में यस, आता यस, है? यस, यस। अजी तो तू नानो छे, मीन्स यस, गुजरात में ऐसी बिल्कुल। कहावत है, तू नानो छे, तू मोटो नहीं थो। सो यस, अभी तुम यू नो छोटे हो, अभी तुम्हें पता नहीं है, तुमने दुनिया देखी हाँ, नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। और सेकेंडली क्या है कि इंडिया में ये बहुत कहा जाता है, बहुत कहा जाता है भाई, युवा इस देश का भविष्य है। सो ये एक मेंटल प्रोसेस है जो उसके दिमाग में इम्प्लांट किया जाता है, दैट यू आर द फ्यूचर, यू आर नॉट द प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में काम मत करो, तुम फ्यूचर में काम करना। सो वो फ्यूचर के लिए सोचता है। अब जब वो फ्यूचर में जाएगा, देन ही विल नो लॉन्गर बी इन दैट फेज ऑफ बीइंग यंग और बीइंग हम्म, यूथ, राइट? तो हमें ये सोच विचार को बदलना है, कैसे हम राइट मैसेज दे, यूथ इज द प्रेजेंट एंड नॉट द फ्यूचर, है ना? हम्म, सो व्हाट the youth, if you believe and invest in young people right now in the present, they will act now, and I think that will be the future of the nation. It is not the future of youth, but it is the future, that the nation will yeah, progress in a way. So I think investing in right time, I see it very important for a country like India. जब इंडिया के पास इतना बड़ा यूथ फ्रेगमेंट है, यूथ सेगमेंट है, आई थिंक विच इज अ ग्रेट रिसोर्स। अब ये रिसोर्स को हम्म, कैसे एज अ नेशन इंडिया यूटिलाइजेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हो क्या रहा है, व्हाट आई सी इज मोस्ट ऑफ द यंग रिसोर्सेज आर आइडल। We have to tap in, we have to convert this youth potential into a very positive effective channelize करके इसको कैसे नेशन डेवलपमेंट में आगे लेके जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रहा है, आई थिंक दैट इज वेरी प्रॉमिसिंग, बिकॉज वो ग्रास रूट से वो चेंज लाने का एक कोशिश है। हम्म। तो आई थिंक स्कूल लेवल से ये जो एडोलसेंट से यूथ का जो ट्रांजिशन फेज है, उसमें आई थिंक इट विल डू वंडर्स। Yes, as you said, like we need to tap it, but it's always a personal responsibility, because if you look back to the not very far but a recent history or the independence history, खुदीराम बोस 18 साल का बंदा फांसी पे यस, चढ़ता है बिकॉज उसको देश के लिए कुछ करना था। उसको कुछ नहीं ट्रू, पता था स्वतंत्रता क्या होती है, क्रांति क्या होती है। और मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि कल ही 11 ऑगस्ट उनकी शहादत दिन था। यस, यस, Today, we have the great example of Bhagat Singh, राजगुरु सुखदेव। 22-23 साल के यंग बच्चे जो कॉलेज के लास्ट ईयर के होंगे, they come up as an individual, became an ideology, became या, an influence, ट्रू, became an inspiration। उन्हें कोई बताने वाला नहीं था कि तुम ये करो, या वहां पे कोई वो नहीं था कि उन लोगों के लिए रिसोर्सेस करे। सो राइट, मादेश, दिस इज द वेरी रीसेंट एग्जाम्पल एंड वेरी सक्सेसफुल एग्जाम्पल। हम उसके आसपास तो लाइक उसके से अच्छे एग्जाम्पल्स हमारे पास शायद नहीं हो सकते। यस, How do you think, as an individual, what's our responsibility as a youth towards our country, in whatever country you live? राइट, राइट। सो नंबर वन, यू गेव वेरी गुड एग्जांपल्स, आपने बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए, जैसे खुदीराम बोस जी का दिया, भगत सिंह का दिया। तो वो लोग पैशनेट थे, जो करना चाहते थे वो पैशनेट थे, और उनका पैशन क्या था? फ्रीडम था, राइट? तो Yeah. उस वक्त फ्रीडम था, फ्रीडम, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए था, है ना, फ्रॉम द कॉलोनियल रूल एंड एवरीथिंग। तो उनका पैशन था कि हमें फ्रीडम चाहिए, इतने मोटिवेटेड थे, दे कुड गो टू द एनी लेवल, नेक्स्ट लेवल तक। Yeah. और दूसरा, आज के यूथ और वो यूथ में क्या डिफरेंस है, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा बिल्कुल। कि आज तो हमारे पास पावर ऑफ सोशल मीडिया है वगैरह, काफी सारी चीजें हैं, बट फिर भी हम नेशन वाइड रिवॉल्यूशन या ग्लोबल रिवॉल्यूशन यूथ नेटवर्क में नहीं ला पा रहे। अगर बिल्कुल। आप उस टाइम पे देखिए, अगर भगत सिंह ने जो रिवॉल्यूशन शुरू किया था, उस वक्त तो सोशल मीडिया था ही नहीं, और जो भी Yeah. मीडिया था, प्रेस मीडिया, डिजिटल मीडिया, वो भी सप्रेस्ड था, डिजिटल मीडिया तो था ही नहीं। तो वो सप्रेस था, फिर भी उन्होंने जो रिवॉल्यूशन शुरू किया, सारे यूथ जुड़े थे उसके साथ, है ना? बिल्कुल। कश्मीर से कन्याकुमारी, ईस्ट टू वेस्ट। तो एक पावर होता है कि कैसे आप लोगों को रेजोनेट कराएंगे आपके विचार में, है ना? तो नथिंग इज इम्पॉसिबल अगर आप सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है, एंड इफ एवरीबडी अलाइंस to what you think, that is in the global interest, in the national हम्म, interest, I think definitely चीजें काम करेगी और वो रिजल्ट्स भी लाएंगी, है ना? तो यही होता है पावर ऑफ बीइंग सेल्फ मोटिवेटेड, पैशनेट, और जो आप करना चाहते हैं। तो आई थिंक इंडियन यूथ के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो जो भी आप करें, है ना, इट इज नॉट जस्ट आप एक पर्टिकुलर डोमेन में काम करें, वॉट एवर यू आर डूइंग थ्रू योर एकेडमिक्स, आई थिंक दैट इज हेल्पिंग द कम्युनिटी टू ग्रो एज अ कंट्री। और आपका जो एक्सपर्टीज है, वॉट एवर यू डू, डू इट इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर, डू इट इन अ बेस्ट वे। तो आई थिंक उससे क्या होगा, वो एक्सपर्टीज एज अ नेशन, एज अ कंट्री हमारा आएगा,
and we will be able to place ourselves in a very good position globally, and which we have already, which we were already before. So I think हम वापस वो position को हम retain कर पाएंगे with the power of young people. Okay. So you mentioned, like, we need to focus, whatever we are doing is the best. So what are the 3 points which is major concern? Usse azadi chahiye. Aaj, India is not a young country, not a young independent, because 75 years we are celebrating. So it's a mature democracy. It's a mature freedom era now for us. Yeah. What are the 3 topics still exist, and youth wants really freedom from that, so they can go ahead, they can use that full potential and do the things. Right. So, Mahatma Gandhi has always said, be the change you wish to see in the world. So, number one is all young people have to be the self starters, they have to be the self initiators. They need to believe the true potential. We are saying that youth has true potential, but they have to believe it first. So, number one is they have to believe the true potential that they hold in them. Number two is they have to be the self initiators. And then three, they have to explore the power of networking, I think, which is very important in this century, right? So I think if the youth focuses on these three things, I think definitely they can do wonders. No, you said they can focus. I'm saying about the freedom. These 3 issues, they are, bothering the today's youth, and they are like, इससे छुटकारा दे दो, इससे आजादी दे दो. ये 3 चीजें पीछे पड़ी हुई है, kind of. Right. So number one, like if you want to say, a lot of people talk about youth, but they do not have freedom, to express their opinions, or nobody trusts them. So True. they need freedom from this. Secondly, Yeah. the society holds a lot of stereotypes around young people, so youth always feels, to have freedom from this, right? एक Say आध for example, एग्जांपल दे दो वो स्टीरियोटाइप का. right. So when I was a student, I had a lot of ideas. I went to a lot of people, at senior levels, and they did not believe in me that time, because they said, you are a college student, bhai, aa to college no chokro je su karse hai, right? They did not trust us. They talk about young people, but they do not trust us, right? So I think इससे एक फ्रीडम चाहिए. सेकेंडली, जिस तरह से मैंने बताया कि young people are confined in a box, it is not their problem, but they have seen it coming from many years, है ना? So इतना ही career options होगा, यही आप कर सकते हो. It is even today, that you can only become doctors and engineers, right? True. So ऐसा ही है, right? So इससे एक freedom चाहिए. ये पूरा thought process, ये जो bubble है, उसको break करना है, because there is lot more outside this. And India is a country right now, at this point of time, we need such human intelligence, which things outside these circles, because I think this sort of freedom will elevate young people to a very next level, which is very much required at this point of time. And how do you think we need a freedom from that WhatsApp and the misinformation things coming up? Of course, that is a big problem, that we have realized in the COVID-19 times. There was a lot of misinformation, fake news. A lot of people were looking for resources in COVID times, especially for the families and ones in need. But, because of fake information, misinformation, they were not able to access the correct resources in correct point of time. And there were a lot of casualties as well. So, young people have to be very sure, what they are sharing, what they are forwarding. First, they have to do a factual analysis, whether it is correct or not. If it is correct, then only, share it in your network. Apart from this, not only it is not just their responsibility to do this, but even, they should advise their parents, because, parents are also a part of a lot of WhatsApp groups and everything. Suddenly Yes. it comes up, the national anthem is, like celebrated by Goes UNESCO. on the national, Yeah. And this message is doing rounds and rounds every year, right? And parents, they are very happy. They are not aware of this sort of misinformation and everything that spreads over social media and internet. So I think we have to create a sort of sense around these topics. And yeah. Okay. So that's the 4th point to the freedom, because I come across, and sometimes I get so frustrated when I keep getting Right. some of the messages which is completely
illogical, not Right. fact, and everything. So I think Right. the young people like me and you definitely want the freedom from that. So Certainly. Madesh, I know you have a busy schedule, so I don't hold you up. No I problem. wish you all the best for future, and we'll keep talking on various of the topic, Yes. various of your initiative. Once Yes. again, happy International Youth Day to you and all the viewers who are joining us. Thank you so much. Thank you so much. Wish you a very happy International Youth Day. And you have been a part of my journey, since the very beginning. I still remember, we had a call on the train. It's like, Yes, the memories don't fade away. So thank you so much for being there always. And I'm very honored to be a part of this on this day. my Thank you so much. pleasure. Thank you. My pleasure, Madesh. See Thank ya. you.